Let's understand how to solve CAT level data integration. So, first of all, we need to understand what data has been given, just analyze the given data, and we'll try to fix one on one, like reading all the points, point by point. We need to figure out how we can use those pointers in the first time. Right? So, let's read the given information first. And the figure below shows that the street map for a certain region with the street interaction mark from A to L. Okay. So A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L तक ये हमें streets दिए हुए हैं यहाँ से. Then a person standing at the intersection can see along straight line two other intersections that are in a line of a straight and all other people standing in this intersection. मतलब अगर यहाँ पे कोई A पे कोई बंदा बैठा हुआ है, so that A, the person who is sitting at A can see the person who is sitting at E, as well as he can see the person sitting at I, right? Well, he cannot see the person who is sitting at F, right? So straight line होनी चाहिए अगर हमें किसी का साइट यहाँ पे मिलना है, किसी भी पर्सन अगर देखना है नेक्स्ट साइट पे बैठा हुआ है, शॉप पे बैठा हुआ स्ट्रीट मैप पे, so straight line होनी चाहिए. So in this case, without even reading further information, I can strictly say that B can see, whoever sitting at B can see the person whoever sitting at G, F, I, C, D, and A. Right? I hope this much is clear. Right. So next, even example is also given over here. You can read this entire data. For example, a person standing at the intersection G can see all the people standing. Like whatever I have just explained, the same thing they are trying to explain here. Right? Now, this much is not enough to have what we need to find out. The rest of the information is given on the second page. That is, six people U, V, W, X, Y, Z are standing at the different intersection. All right, out of these many intersections, no two people are standing at the same intersection. तो ये भी दिया है कि भाई किसी same intersection पे कोई दो बंदे नहीं बैठे हुए. So in this case, we need to place all these people on the different positions, right? तो ये हम एक एक पॉइंट पढ़ के जो आपको यहाँ पे 1 to 6 पॉइंटर्स दिए हुए हैं, वी आर गोइंग टू रीड दैट पॉइंट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से जो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है वो कौन से स्ट्रीट मैप पे यहाँ पे बैठने हैं. फर्स्ट, X, U, Z are standing at the three corners of a triangle formed by three streets. तो फिर जो भी तीन स्ट्रीट्स हमें यहाँ से इमेजिन करने होंगे जहाँ पे मैं एक्स यू जेड करना है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्राइंगल ये वाला इमेजिन करूँ कुछ चाहिए, तो ये ऐसा हो सकता है एक्स यू जेड, या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे एक्स है यहाँ पे यू है, राइट? तो कुछ भी आ सकता है, बट वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्राइंगल कौन सा. नाउ इफ यू लुक एट दिस गिवन इंफॉर्मेशन या जो डायग्राम यहाँ पे दिया है, दिस कुड बी दैट पॉसिबल ट्राइंगल, राइट? या तो ये ट्राइंगल हो सकता है या फिर सेकंड वाला यहाँ पे एक ऐसा ट्राइंगल हो सकता है, बट इसी में तो कहीं तो भी ये बैठने वाले हैं. नाउ X can see only U and Z. हाँ, ये बात है कि X can see only U and Z. So we need to place X in such a position that he should be able to see minimum number of people. So if I put X over here, he have multiple places to see, right? Throughout the E, H, J or G. You can see every person sitting at those places. But what if I place X at B or C? That is the possible case. तो अगर मैं x को यहाँ से start करूँ, for example, this is my position of x. See, I can also place x at C also, but this is my first case. If in case I don't have anything much to do in this case, I'll shift for you another case where I'll put x at C. Alright, so x can see only u and z. So this could be the possible option that u यहाँ पे आ सकता है या फिर z यहाँ पे आ सकता है, u यहाँ पे आ सकता है या फिर z यहाँ पे आ सकता है. ये दूसरा भी ट्राइंगल मुझे इमेजिन करना होगा, ठीक है? ये एक दूसरा ट्राइंगल हो सकता है. सो x u z, यहाँ पे z यहाँ पे u, कुछ भी हो सकता है. सो लेट्स ट्राई टू पुट z हियर एंड u हियर. ओके, u z, और ये भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे यू ले सकता है, यहाँ पे जे ले सकता है. ये मुझे एक केस को स्टार्ट करना होगा, राइट? तो ये दो तो यूज मैंने कर लिया. नाउ बीइंग सेड, द फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, एक्स कैंसिल यू एंड जेड, यहाँ पे अभी कोई नहीं आ सकता, इस वाले पोजीशन पे कोई भी नहीं आ सकता, एज द सेकंड पॉइंट सेज एक्स कैन सी ओनली यू एंड जेड. सो कीपिंग दैट सेकंड पॉइंट इन माइंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड
यहाँ पे कोई भी आपको प्लेसमेंट्स नहीं रखने। सो लाइकवाइज ए, सी एंड डी, यहाँ पे भी कोई नहीं आ रहा, अदरवाइज दैट एक्स विल सी ऑल दिस पीपल, राइट? Let's go for the third point. Y can see only U and W. Alright. Now we need to place Y in such a way that Y can see only U and W. So in this case, Y I need to put over here at the place of K, and in that case, this would be Z at the F position, and this has to be U in order to fulfill the third point. So now Y can see only U, so this is perfect, and W. So Y has to take the place where यहाँ पे एक W आ सकता है या तो यहाँ पे एक W आ सकता है, ठीक है? तो मैं इसे अलग अलग में रख देता हूँ, कहीं भी आ सकता है। W is either could be here और W एक यहाँ पे हो सकता है, तो मैं इसे सर्कल में मान लो, ये अभी फिक्स नहीं है हमारा, एलो पॉइंटर्स आर नॉट फिक्स्ड, बट दिस इज द पॉसिबल केस दैट W could be at I or L or I. Let's go and verify the fourth point. You can U sees V standing in next intersection behind Z. So you can see V next to Z. तो भाई यहाँ पे V को मैं मार्क कर सकता हूँ, राइट? तो यहाँ पे V हो गया फिक्स. Now coming back to the third point, Y can see only U and W. So combining third and point, this is the only possible place that we can place, find out the placement of W, right? Let's read further and we'll come back again to the point number 3 and 5. Fifth point says W cannot see VZ. So W cannot see VZ, it means you cannot place W here. So the only position left for W is the last position, that is I. Sorry, L. So fifth position is also taken. Now, no one among the six is standing at the intersection D. It was already clear enough at the starting point only that X has to see only Z and U. So in that case, nobody will take the placement at D. Now let me check how many placements we have done. X is sitting at D, Z is F, then V, this is U, and this is Y, and this is W. Now we need to re-verify whatever points we have written here are fulfills the given conditions or not. First, X and U are standing at the three corners. Yes, so that is the first case. This is correct, which fulfills the given information according to our arrangement. Second, X can see only use it. So let me see, is there anybody else जो x को देख रहा है या फिर x उसे देख रहा है? X कैन सी ओनली यूज इट, x के लाइन में कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा और यहाँ पे भी कोई नहीं, इसका मतलब सेकंड भी आपका डन. थर्ड, y कैन सी ओनली u and w. Y can see only u and w, that is also correct. There is nobody else which is coming in between y side, right? So ये भी आपका परफेक्ट हो गया. Next, u is v standing in next intersection behind z. Okay, so that is also the fulfilled, completely fulfilled condition. Next, W cannot see V or Z. V or Z को W नहीं देख सकता. That's it. तो ये भी correct. And six, anyways, it was the first information which was by default correct. So in this way, all these conditions were fulfilled. Now the best remaining part is to answer the given questions, right? Let's go for the first one. Who is standing at the intersection A? A पे कौन बैठा है भाई? देखते हैं, right? So at the information given, according to the information given in the first hand, there should not be anyone else sitting at A. Why? Because X कोई भी नहीं देख सकता, that X sees only U and Z. So even if आपने ये पूरा स्टेटमेंट नहीं भी बिठाया, then only you will be able to answer the first question, right? So first question will take option C as the correct answer. नेक्स्ट, हु कैन वी सी, तो वी को कौन कौन देते हैं? आप देखो जेड एंड यू का ही एक ऑप्शन दिख रहा है मुझे. इज देयर एनीबॉडी एल्स अदर देन यू एंड जेड? नो. सो इन दैट केस ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर. सी वंस यू डन विथ योर अरेंजमेंट्स, solving questions should not be a matter of fraction of seconds, right? So you should be able to answer the given questions within 30 to 40 seconds. That is the requirement in CAT examinations or any other management level examinations. Next, what is the minimum number of split segments that X must cross to reach Y? अच्छा, Y को कितने X को reach करना है Y तक, तो कितने segments cross करना है? तो यहाँ पे देखते हैं, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से ग्रीन ले लेता हूँ. So X को Y तक आना है, Y का है कहाँ पे है? चलो, ये वाला Y यहाँ पे बैठा हुआ है और ये यहाँ पे बैठा है.
So दो तो सेगमेंट क्रॉस करने ही होंगे, दैट इज एफ एंड जी, और फिर ये के पे आ जाएगा, राइट? सो इन द अदर वे, इफ यू टेक द अदर वे अराउंड, दैट इज फ्रॉम एफ, एक्स एंड के, इन दैट केस also he has to cross minimum 2 rounds, right? So f and g, so to reach y, x must cross two streets to reach y, right? Next, should a new person stand at the intersection D? अच्छा चलो, एक D पे कोई बोल रहा है, D के अगर कोई बिठा दिया यहाँ पे, let's try to put in the position of D, A B C D, यहाँ पे अगर कोई है नया पर्सन, so let's say that is N, तो इसकी बात हो रही है, who among the six would he see? तो भाई N को कौन दिखेगा? There are two people who can see N, that is X and W. So X and W की जगह और कोई ऑप्शन दिख रहा है? अच्छा, D का ये पोजीशन नहीं है, X and W. So option C has to be the correct answer, right? So other than X and W, there is nobody else जो n उनको देखेगा, right? So these are the four questions based on the given information. So the first point that you need to understand while solving CAT data interpretation sets, you need to analyze the given information, then read the points one by one, write down all the points wherever it is necessary, and try to solve the questions in one or two possible cases, right? So at the initially I started with these two possible cases. अगर मुझे first वाला case यहाँ पे आगे नहीं कुछ information देता, so immediately I would have shifted to the second case.